खुसूसी मनाजिर हैं। लाहौर कलंदर्स और PSL के दरमियान अगले 10 साल के लिए मुआहदा तय पा गया है। साइनिंग सेरेमनी है और CEO सलमान नसीर PSL के CEO हैं और CEO लाहौर कलंदर्स स्टेज पर मौजूद हैं। हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर जमान के हमरा अगले 10 साल भी लाहौर कलंदर्स अब PSL में इन एक्शन होगी। शायकीन क्रिकेट के लिए यकीनी तौर पर बड़ी खुशखबरी है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए साइन हो चुके हैं। लाहौर के अंदर आपको एक्शन में नजर आएंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। CEO PSL और CEO लाहौर कलंदर्स ने ऐलान कर दिया है कि अगले 10 साल के लिए एक बार फिर से भरपूर तालियां मुझे नेक्स्ट 10 इयर्स एक्शन में नजर आएंगे। लाहौर के अंदर और तकरीब में श्रीलंकन क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को भी ख़ास तौर पर दावत दी गई है और आप देख सकते हैं फ़खर जमान और हारिस रऊफ़। I mean, they are not allowed to talk to media like this, otherwise उनका इस मुतालिक क्या कहना है, क्या वर्जन है, वो आप तक पहुंचाते हैं। ये 3 ट्रॉफीज़ जो लाहौर कलंदर्स अब तक जीत चुकी है। लाहौर कलंदर्स और PSL के दरमियान अगले 10 साल के लिए मुआहदा तय पा गया है। लाहौर कलंदर्स अगले 10 साल मजीद PSL का हिस्सा होगी। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शाहीन शाह अफरीदी आप देख सकते हैं। हारिस रऊफ़ भी यहाँ पर मौजूद है। CEO PSL सलमान नसीर भी यहाँ पर मौजूद है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के एजाज़ में ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर दोहराने का अहतमाम किया गया है। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के MD भी यहाँ पर पहुँचे हैं और एक पुरवकार तकरीब है। आप देख सकते हैं कौमी क्रिकेट टीम के सितारे हारिस रऊफ़, फ़खर जमान सब यहाँ पर मौजूद हैं और एक बड़े मूवमेंट है, बड़ा मौका है और अब ये सफ़र 10 साल मजीद होगा और जो गुज़िश्ता 10 साल लाहौर के अंदर जो PSL का रहा है उस साथ को सेलिब्रेट किया गया बेहतरीन तरीके से। कोशिश करते हैं कुछ प्लेयर से गुफ्तगू करें और उनका इस पर क्या कहना है, कितने एक्साइटेड है, उस हवाले से उनका वर्जन भी आपके सामने रखें। असल भाई अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो। कितने एक्साइटेड है अगले 10 साल मजीद के लिए? यार बहुत एक्साइटेड है लेकिन अभी ये अलाउ नहीं है। ओके अभी अलाउ नहीं है लेकिन एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है और अगले 10 साल मजीद लाहौर के अंदर तो PSL का जोड़ होगा। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी है, वो देखेंगे और इंजॉय करेंगे। रिपोर्ट करें आपको इस्लामाबाद से। CEO पाकिस्तान सुपर लीग और CEO लाहौर कलंदर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत मुबारक हो। लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जानी पहचानी जाती है, लोगों के जज्बात वाबस्ते हैं। 10 साल का मजीद साथ होगा, कितने एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा, और ना सिर्फ सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं बट अब तो EY ने ये भी बता दिया कि सबसे ज़्यादा वैल्यूबल भी यही हैं। तो इनको बहुत बहुत मुबारक हो एंड हमें भी लॉन्ग 10 years एसोसिएशन इंशाल्लाह आगे भी रहेगी हमारी। सो वेरी वेरी एक्साइटेड। PSL अब एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, लोगों के जज्बात वाबस्ता है। 10 साल मजीद PSL के साथ आपका क्या एम्स एंड गोल्स हैं और ये क्या सोचने में मजबूर किया इनको, सलमान साहब को रीच आउट किया और फैसला हो गया? यार ये बात ये है कि 2 चीज़ें आप देखें, एक यूथ पैशन और दूसरा लव। तो इट्स नो ब्रेनर कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो आप पैशन से करते हैं, ठीक है, उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, एम्पावर करते हैं, और लव अगर हेड है तो इसमें क्या पूछना और क्या सोचना। तो जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं कहा अब डन, मुझे नहीं प्राइस सुननी, मैं हूँ। और जब आप कमिटमेंट लेके आए आज से 10 साल पहले, जब पाकिस्तान क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट नहीं थी, जब पाकिस्तान में मैचेस नहीं थे, जब पाकिस्तान में कहा गया था टैलेंट ख़त्म हो चुका है, आज शाहीन, हारिस, फ़खर, वहाँ प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम इसलिए शुरू किया था। तो जब यूथ के लिए आपने टीम ली और लोगों का दिल जीतते थे और पाकिस्तान का दिल लाहौर था, तो ऑब्वियसली लाहौर के अलावा तो नहीं हो सकती थी। तो अभी तो हमारी सफ़र शुरू हुआ है, इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो ये ब्रांड जो है वो ग्लोबली इसने पाकिस्तान की पहचान बनना है और पाकिस्तान के हर नौजवान का हाथ थामना है। सितारों से आगे जहां और भी है सर। बिल्कुल, और इश्क इंतहा भी हो। बहुत शुक्रिया CEO। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी नहीं मिली जिसने सबक याद किया। बहुत शुक्रिया CEO PSL और CEO लाहौर कलंदर्स हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा अभी तो ये आगाज़ है, अभी हमने कितना तवील अरसा आपस में गुजारना है, PSL को इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है और लोगों को और ख़ास तौर पर नौजवानों को ये उम्मीद देनी है कि PSL आपका ब्रांड है और इसके ज़रिए आप पाकिस्तान खेल सकते हैं। अखर भाई अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो। कितने एक्साइटेड है अगले 10 साल मजीद खेलने के? यार बहुत एक्साइटेड है लेकिन अभी ये अलाउ नहीं है। ओके अभी अलाउ नहीं है लेकिन
एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है और अगले 10 साल मजीद लाहौर कलंदर्स और PSL का जोड़ होगा। शायद कि इन्हें क्रिकेट के लिए खुशखबरी है, वो देखेंगे और इंजॉय करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं आपको इस्लामाबाद से। In the morning, I have meetings. That's your family time. Afternoon to evening, you and me are together. We sat down in a little cafe and we worked out the combinations, the plays available, the phone calls made. Those 4 days, the late night walks to look for Nihari in one of those little cafes and then discussing the team. I mean, I tell you, I think when you win that trophy, all those little meetings we had suddenly made it worth it. One more thing, my family arrived for PSL and I got a call from Samin Bhai at 1:30. I mean, those who know me will know that that's like 5 p.m. for me, 1:30 a.m. Those who know me will know what I mean. Samin Bhai called me at 1:30 a.m. Samin Bhai said, "Oh, your family arrived?" I said, "Yes, Samin Bhai." "Your room is okay?" I said, "Yes, Samin Bhai." "Your family is comfortable?" I was like, "Yeah, Samin Bhai." "Are you happy now?" I said, "Yes, Samin Bhai." "Just so you know, between 2 a.m. and 3 a.m. that's our time. Make sure your wife knows that." "Okay, Samin Bhai." Lastly, to finish it off, another good example of, some people call it madness, some people call it trust, some people call it faith. Those who understand Lahore culture will call it differently. Those who don't, those will absolutely call it madness. I remember playing that test match and the test match ended and we were doing a lap of honor because we were playing in Nottingham, but it felt more like Harare Sports Club. The crowd was amazing. And I got a call from Samin Bhai saying, "We want you to come." I said, "You have won the games without me. Just play the final without me." And he said, "I'd rather lose the final with you than win it without you." And I started to think a little bit. And then Shaheen called. Shaheen didn't ask me anything. He said, "Your flight is booked. Get onto the plane. It's from Birmingham." And he hung up. And I'm thinking, okay. Luckily, Mr. Makoni was there. I was like, "Chief," I call him Chief. I said, "Chief, there's an outside chance to play the final. Can I go?" I think the good thing was Blessing was going for another league as well, so Chief couldn't say no to me, otherwise he would have stopped me. So, 6:50 boys, to wrap it up. Drove 90 minutes from Nottingham to Birmingham. 8 or 9 hours flight, I don't even know. To Dubai, drove to Abu Dhabi, flew to Pakistan. 6:50, 2 plane landed. 6:56 hours out of the plane. And now you see 2 people, myself and where's Falak? Falak, yeah. Falak played a huge role as well. Me and Falak are just running out the airport. And the police ask us, no, you can't run in the airport. And credit to Mohsin sir, he organized some protocols for us. So there's a guy behind us who's saying, no, let them go. No, we are running through immigration and the officer is saying, no, sir, you have to do your immigration. The guy at the back said, let them go. Then there's a guy who sits to check the passport stamp. He said, where's your passport? I need to see the stamp. The guy at the back said, no, let them go. We got to the x-ray machine. Sir, you have to do x-ray and I need to see your luggage tags. The guy at the back, I don't even know who we were. Let them go. We ran out of the door. And now, when 2 people run out of airport, there's that moment of shock. And everybody is just like, why these 2 people are running? Falak is ahead of me, I'm behind. And then I heard someone saying, "Oi, this is Sikandar Raza." And now everybody's running behind us. And we are in the car, drove on the footpath, drove on a one-way, got to the ground, 7:20, 7:23 ready, 7:25 anthem, 7:30 first ball, 7:30 first ball, 12 a.m. PSL champions. Thank you. लंबी दास्तान सिकंदर रज़ा ने सुनाई, इंटरेस्टिंग दास्तान। I think the way I'll share the story will actually tell you exactly how we live in that little family of ours, Lahore Qalandars, and how we see it. For you guys, they are owners, but for us, they're not. They're part of family. They created a culture that allowed us to be who we are, without any makeup, without anything. My first year, Samin Bhai never accepted this, but Samin Bhai,
you picked me in my first year blindly. You did not know what you're getting, but he keeps denying it. He's like, no, I knew. No, he didn't know. He knew there was a cricketer from Zimbabwe, but that's all he knew. I remember my first meeting with Lahore Qalandars. He called me into his room and he said, you'll play all 10 games. You score 10 zeros or 10 hundreds. We will review your season after 10 games. And I mean, I was blown away. Most of the franchises, you know, it wasn't like that, but my journey started with Lahore like that. Then I was very, very, very unfortunate that Fakhar Zaman was there, and I ended up being with him for 3 years. It has been very, truly painful 3 years with Fakhar Bhai. फखर ज़मान And शाहीन the only prayer I और have is दीगर भी शरीक हैं Fakhar Bhai long may it continue for me and you. Another story is second year. I had a very average year. और लाहौर We कलंदर्स lost all the के games, and 7 को I remember 10 साल all the मुकम्मल हो गए senior और guys इस took हवाले it से upon इस तकरीब themselves. का इनेकाद And I remember before I left, and I was like, man, we had a poor season. I had a poor season, and